after drawing flack for its portrayal of Ravan and a poor special effect charge. Now some of the dialogues are being seen as cringe-worthy and unbecoming for deity-like figures. People have also taken exception to deviations from original texts that the faithful are familiar with. Under pressure, the filmmakers announced that they will be making changes to the dialogues to accommodate objections raised by the audience. Addressing the negative reviews, Adipurush director Om Raut said that Ramayana is impossible for anyone to understand, yet calls for a ban continue. The question now is, have the filmmakers crossed a Lakshman Rekha in the name of creative license and taken Hindu sentiments for a ride? देखिए, हम निवेदन करें, जिस किसी भी ने ये फिल्म बनाई है या जो भी इसके कलाकार हैं, उन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राम के प्रति बढ़ा चढ़ा करके जो अगर दिखाता है तो निश्चित वो राष्ट्र विरोधी, राम विरोधी है और सनातन धर्म का विरोधी है। उसको भारत में न रहना चाहिए और रहता है तो उसको जेल में डाल देना चाहिए तत्काल। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Shahzad Khan actor, Saira Shah Halim activist, Acharya Vikramaditya spiritual guru, Shoaib Chaudhary TV and film producer. Also joining us is Sunil Lahiri, who is the original Lakshman in Ramanand Sagar's Ramayana. But I want to start with you, Saira Shah Halim. Do you think that the makers just took for granted the sentiment of viewers saying that, oh, if there will be a seat reserved for Lord Hanuman in the theatre, people will come and watch the film nonetheless? Their basic inherent sentiment was disregarded. Well, good evening. I'm glad that this question is asked because, this movie is backfiring very badly with the filmmakers who thought that they'll get away, promoting a particular political party. And this just shows that boycott and cancel culture doesn't work. And sometimes it can just come back to you. So I think filmmakers have a different perspective. I haven't seen the film as yet, but all I can say is that there are 300 different versions of the Ramayana as far as I know. And then there are different countries like Cambodia, Thailand, Indonesia, you have Burma, Malaysia that have their own versions. Now I think the filmmakers, this is my perspective, they can have their own version as long as you're not disregarding or disrespecting the deities, the gods, or you're not portraying them in a flimsy or careless manner. I think they should be given the freedom of expression as long as they are not hurting the sentiments of any religion, or they're not showing a completely wrong or negative portrayal of the deities or the gods and goddesses. That's what I feel. I think creative liberty should be encouraged, and cancel culture is very, very wrong because it deprives a person of creativity, because all the time you are thinking about the output. How will the audiences react? But that is exactly what anyone would think of, right? We know what happened during Padmavat. Exactly, that is what filmmakers should be thinking of, right? Like, if you look at the dialogue writer, he said, I was seeing on Twitter, he said, this Manoj Muntashir ji, he said that this movie is comparable to the Ramayana. Okay, later after the film got released, when the backlash happened, he totally changed his statement. And he said, no, it is not a version of the Ramayana. It is called Adipurush for a reason, because we didn't want to show it, the way Ramayana was in its original text. We wanted to modernize it. Now, when we come to modernizing, when the subject of modernization comes in, we need to understand how much liberty can filmmakers take. Okay, Acharya Vikramaditya, there was no insult intended. Ye sirf ek modern version hai. They have just modernized it. Casual language. And they should be allowed to do that. How do you respond to that? That सिर्फ मॉडर्न किया गया है, कोई इंसल्ट नहीं किया गया। आचार्य जी। जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, राम का जिस प्रकार से जब ये जो हमारे जो थे यहाँ पर पैनलिस्ट बोल रहे थे कि कोई 300 वर्जन्स रामायण के मिलते हैं, लेकिन सब में राम जो हैं परमात्मा ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब जगह राम को ही मुख्य कैरेक्टर माना गया है।
क्या किसी और देवता के ऊपर किस प्रकार की जो शब्दावली यूज की गई है वो कर सकते हैं? आप समझें कि राम को, इस फिल्म को बच्चे भी देखने जा रहे हैं, क्या मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो लैंग्वेज यूज की गई है अपने बच्चों के साथ बैठकर कोई फिल्म देख सकता है कि किस प्रकार का हास परिहास करने का प्रयास किया जा रहा है? जली और जिस प्रकार से लंका और कपड़ा और जो ये शब्दावली यूज की गई है वो मुझे नहीं दिखाई देता कि किसी और धर्म के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ राम को साक्षात परमात्मा माना गया है। जहां पर अगर सुंदरकांड में आप देखें तो वहां पर राक्षस भी भगवान राम को कहते हैं। जगह आपको मैं सुनाऊं थोड़ी सी लैंग्वेज वहां पर। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कहूं काल कराला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। इसका सीधा सीधा मतलब है राम जो है वो केवल राजा नहीं है, वो समस्त लोगों के स्वामी हैं और इस काल के ही काल है, इस बात को समझना चाहिए। ये रावण को समझाने का प्रयास किया जा रहा है उनके लोगों के द्वारा। तो यहां जो बैठे हुए लोग हैं सब आज की तारीख में सो कॉल्ड लर्नेड पीपल यहां बैठे हुए हैं, ये क्रिएटिविटी के नाम पे जो काम करते हैं, मुझे बताइए कि क्या किसी और धर्म के प्रति ऐसी क्रिएटिविटी जगा सकते हैं आप? किस प्रकार के बात करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या करने का प्रयास? एक तरफ तो इतना ड्रामा किया जा रहा है कि हनुमान जी के लिए वहां से एक सीट छोड़ी जा रही है। आपने देखा होगा कि एक शोषा किया गया था कि दे आर लीविंग वन सीट फॉर हनुमान जी, इस प्रकार की बातें कर रहे थे शोषा करने के लिए। और वहां पर जो लैंग्वेज यूज की जा रही है, अगर मैं उस लैंग्वेज को आपके समक्ष रखूं तो शायद वो 3-4 डायलॉग्स इतने खतरनाक हैं कि जिसके अंदर आपको लगेगा कि यहां लिखा गया है कि बहनों के हाथ लगाओगे तो लंका लगा देंगे। आप समझे कि ये शिष्टाचार है, ये मर्यादा है। देन दे इज सेइंग कि तेरे कपड़ा तेरे बाप का, कपड़ा आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। What kind of language? मुंबई की टपोरी लैंग्वेज सलमान खान की पिक्चर दिखा रहे हैं या भगवान राम के ऊपर आख्यान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं? शहजाद खान, there is a certain छोटे बच्चे kind of language you would associate with an epic of this proportion. Do you think, जिसको कहते हैं, is this dignified, the kind of language used? Thank you very much for having me on your show, Padmaja ji. देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी होती है और होनी चाहिए और होती रही है, तो उसमें क्या, आई डोंट सी एनीथिंग आपत्ति। ऑब्जेक्शन ऑन दैट? सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करेंगे आप? देखिए, अब मैं, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोला क्या? आप गा भी रहे थे, आप गा भी रहे थे, आप ये भी कर रहे थे। मैंने आपने मेरे मर्यादा पुरुष, आपने राम, मैंने आपके देखिए मेरी बात सुन लीजिए, हम पिक्चर की बात कर रहे हैं, का प्रयोग कर सकते हैं हम? क्या हुजूर की शान में आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए। अच्छा, आप कहाँ थे जब कश्मीर फाइल्स बनी थी? जब कश्मीर फाइल्स बनी थी, केरला स्टोरीज बनी थी, where were you? Where were you, Swami ji? Where were you? Where were you? This we are talking about the film. Why are you getting so hyper when there are 300 Ramayans? Had every virgin is different. आप मुझे बताइए, हम तो हाइपर हो रहे हैं। अगर आप क्यों हाइपर हो रहे हैं यार? आप आराम से बात करिए। आप एक गर्दन कट गई होती, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। अरे हम तो हाइपर ही हो रहे हैं इंसान हैं, क्यों आप हाइपर हो रहे हैं? वहां तो सब तन से जुदा वाली बात होती है। या तो या ये बोल रहे या हम बोल रहे हैं। पूरे देश में आग लगाना, क्रिएटिविटी नाम की चीज है। अच्छा, कश्मीर फाइल्स बनाई आपने, केरला फाइल्स बनाई, तब आप कहाँ थे? तब भी आपने कहा था क्रिएटिव फ्रीडम है। कहाँ है वो खैर, कहाँ है वो पंडित, कहाँ है वो अग्निहोत्री? और जब सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम नहीं है, जब सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम नहीं है, सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? Okay, there is a slight difference, Mr. Shehzad Khan. Isn't there a slight difference? Kashmir files में, which by the way got banned, not Kashmir files, Kerala story was banned by the government of Bengal. एंड उसके लिए भी वजह यह देगी कि भाई कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। व्हाट वाज द आर्गुमेंट गिविंग दैट कि आप 3 लड़कियों की कहानी थी, आपने 32,000 कैसे बोल दिया? ऑन समथिंग लाइक दैट अ बैन वाज इम्पोज्ड, बट हियर for somebody who's considered a deity by millions of people, you are using language like you are tampering with basic
details, जी, things like आपकी सोने की लंका है, things like आपका पुष्पक विमान है, all of that hasn't been represented properly. ये यूथ के हिसाब से बनी है ना, 2023 का वर्जन है ये, मुंतशिर जी ने खुद, मैंने देखा सर, यूथ के हिसाब से ऐसा तो होगा नहीं कि गांधी जी को डांडी मार्च की जगह ब्रेक डांस करा देंगे, कि यूथ के नाम पे आप कुछ भी आप चला देंगे, कहेंगे हम उसको मॉडर्नाइज करना चाहते थे तो डांडी मार्च की जगह वो ब्रेक डांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे ना आप। नहीं देखे, people who do want to see the film but should not see the film then. That is true. People who don't want to see should not see the film. But on the other hand, they have the right to democratically oppose it and say, I have a problem with it. Violence obviously should not happen. But people have the right to say what rubbish is this. When you have a problem with a color, with a bikini color of Deepika Padukone, you all have, there are problems with everything that people have. There are certain sections which have a problem with everything. So but then you should say the same thing to Mamata Banerjee also, who went a step further and she banned the film. She banned it, sir. वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि डेमोक्रेटिकली किसी को बोला गया कि हाँ हमें प्रॉब्लम है. Okay, respond to this, Shoaib Chaudhary. Respond to what he's saying, Shoaib Chaudhary. जब केरला फाइल्स चल सकती है, जब कश्मीर फाइल्स चल सकती है, केरला स्टोरी चल सकती है, आपको अच्छी नहीं लग रही, don't watch it. Don't protest. No, I do not agree with Shahzad Khan's point. See, as a filmmaker, I do have a certain responsibility towards the film industry. But today, I stand with the people who are boycotting this film for the simple reason that I very strongly believe that no liberty should be taken in the name of, making creative ideas that would hurt any religion or the community for that matter. But there are a few good things about this film as well, which is like this film has united all communities these days. Every community, be it Sikhs, Hindus, Muslims, Christians, everybody is out to boycott this film, and this is exactly what we need to see in coming times. People who are boycotting this would realize now that the films like Kashmir Files and Kerala Story was hurting a certain community and targeted at hurting the Muslim sentiments. They should have spoken in the same length at that time also. Allow me to complete, please not disturb me. There's another thing, some gentleman who just mentioned the slogan called Sar Tan Se Juta, which is always attributed to the entire Muslim community. Today, I hope the media and the entire Hindus will not be attributed with the slogan Tera Sar, Tera Ghar, which is called out for Manoj Muntashir tonight. I again say that yes, thankfully the film has united all. आचार्य विक्रमादित्य, शोएब चौधरी कह रहे हैं कि तेरा सर तेरा घर थ्रेटन किया जा रहा है मनोज मुंतशिर को, क्या फर्क है उनमें और जो स्लोगन्स की आप बात कर रहे थे? पद्मजा जी, मैं मिस्टर चौधरी को कुछ कहना चाहता हूँ. ओके, गो ऑन. शहजाद खान. देखिए मैं यस एक बात समझे, मिस्टर चौधरी, हम लोग कोई भी इस तरह के डायलॉग को बिल्कुल किसी भी प्रकार से स्वतंत्र से जुदा ना ही तेरा घर इस प्रकार के लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं आप चाहते हैं कि अगर ऐसा सर तन से जुदा का स्टेटमेंट वाज एट्रीब्यूटेड टू द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी. दे इज कॉल्ड एज अ सर तन से जुदा gang. It has been said multiple times on multiple platforms. I do not agree with that. At the same time, I do not agree with this fringe element calling out Tera Sar, Tera Ghar. Never do that. Whoever has said this against Manoj Muntashir, I am completely against the film. But there is no space for violence in the society. I would like to say something. I would like to say something to you, Mr. Chaudhary. Please, Padmaja ji, give me 60 seconds. Mr. Chaudhary, I heard you're making a web series on Sir Syed Ahmad Khan, the founder of AMU. He was such a controversial person. I would like to see, जो आज आप इतनी चौड़ी छाती करके कह रहे हैं ना, जब आपकी वेब सीरीज शुरू होगी सर सैयद अहमद खान पे, तब आप भी मनोज मुंतशिर की तरह सिक्योरिटी मांगते हुए नजर आएंगे. मैं तब देखना चाहता हूं कि कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं. या आप stop creating nonsense against Sir Syed Ahmad Khan. He was such a respected figure in the history. Yes, he was creating this controversy against Sir Syed Ahmad Khan. He was, and I do not wish to talk about my web series right now. It is under production. I do not wish to talk about it. Please. Why you don't wish to talk about it? Okay. I would like to know. Okay, if there is nothing objectionable, if it is passed by the censor board, any work, whether it is film, whether it is TV, deserves to be screened, but equally in a peaceful fashion. If people feel that their feelings have been taken for a ride, they have the right to protest as well. Let's hope that in the future,
people's feelings, their sensibilities with your point, are taken into consideration. I'll leave it at that. Thanks very much, gentlemen. Sarah Shah Halim for joining me.